Hi guys, what we're going to work on today is letter writing. Now, before starting all that, I must introduce myself to you. It's RAHUL from class 2 for all of you with a new version of letter writing. Exactly, the letter writing. There's something that we need to work on, or something we must be a master of. Yeah, exactly. The letter that comes in our mind is with a version of the letter to write. Maybe being a 12th classroom, I must know how to write a letter to write. What is the format and what the best way to write on letter? अच्छा कुछ चीजें क्लियर करते हैं. जब बच्चे लिख रहे होते हैं लेटर राइटिंग, एक कॉन्सेप्ट आता है लेटर राइटिंग करनी कैसे, तो हमको कुछ समझ नहीं आता. हम समझ नहीं पाते करना कैसे, हाउ टू वर्क इट. अच्छा जनरली लिख तो लेते हैं, बच्चों ने लेटर लिखनी सिखाई नहीं हमें, लेकिन लेटर लिखने के लिए हमें पता क्या होता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर लिखना शुरू करते हैं. द फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज, हां जो शुरू करना है और लास्ट में आता है वो रटा हुआ है, वो लिख लेते हैं. बीच का पता ही नहीं यार करना क्या होता है. ओके, नाउ today I am going to give you the magic version of SHARMA to write a letter. Okay, you need to work out just 3 steps. Then you the master of letter writing man. Think and then do. Here we will start out the letter writing. Now letter writing. Somebody says what means letter writing? होता क्या है, कैसे लिखते हैं? अच्छा letter to entry क्यों? अच्छा exactly somebody who asks why to the letter writing to the editor only? क्यों editor क्यों? यार ये वो क्वेश्चन 99.9% पक्का बोर्ड में आता है. ठीक है, तो we need to prepare for this one. Really, remaining I will be doing the last classes, not the next class or the other classes. Exactly, the video class is not going to be over now. It being just started on, तो आपको आगे मिलेंगे जल्दी. अभी हमने इसको कॉन्सेप्ट करना है क्या है, दिस इज द लेटर टू एडिटर. अच्छा आपने कहा सर लेटर टू एडिटर जनरली इज अ लेटर होना चाहिए फॉर्मल लेटर, या दैट्स फॉर्मल लेटर, देन वी हैव टू फॉलो द पैटर्न. या एग्जैक्टली द पैटर्न. सर इट्स ऑल अबाउट sender is exactly who is the sender, the one who is sending the letter to someone. अच्छा आपका एड्रेस दिया होता है, you are the sender man. Remember you are the sender, you are sending letter to someone. आप लेटर लिख रहे हो तो आपका जो एड्रेस उस लेटर में दिया होगा आपको लिखना है. It's not being कि आपने लेटर A B C नगर Y Z आपको लिख दोगे. Sorry boss, जो आपको दिया होगा वहां you have to write that will given the question only. Okay boss, you can work it out. Sender address. The second one, the date. Name of addressee, exactly the addressee जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, it must be the editor. Then address of addressee, and then sir complete होगा सर. हम लिखा sender address, date, name of addressee, address of addressee. Then what we need to work it out? We need to work it out the subject. Exactly, we need to write the subject. Okay sir. Subject आ गया आपका. Then salutation. It's salutation. Hi, I say in the degree. Hi, the salutation is all about. Here the salutation is what? Yeah, exactly. Respected sir, man. Being a very formal man, you need to be. So the salutation is respected sir, man. What do you want to write now? And then says the body. Exactly. This is the major part. This is the real part of letter writing. And then complimentary note. एनुअली. सर क्लियर है, पता भी लग गया लिखना है यार, ये तो हर बच्चों के लिए होता है. दिस टू दिस एवरीवन नोज, एवरीवन, even the duffers of our class, they know how to write a letter, or they know how to format the letter. I don't want you to be a man, I want you to be the topper. How you can be topper? Exactly, आप कैसे बन सकते हो? शुरू करते हैं लेटर राइटिंग पढ़ कर. अच्छा लेटर राइटिंग ध्यान से पढ़ना है, पढ़ते हो सब है, इस बार ध्यान से पढ़ना है कि लेटर में लिखा क्या हुआ है. What the message? Exactly, what is the message that you need to convey in a letter writing? ध्यान से पूरा ध्यान से पढ़ना. We have to work it out. आपने कहा how I'm going to read it. ठीक है सर, ये आपको दिया था सब्जेक्ट.
The key which is the subject. So the topic is कुछ भी हो सकता है. Somehow the road expense. Somehow change getting no. Then this is a case of looting. कुछ भी हो सकता है. Then safety woman. Exactly कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. So you have to work on the subject. And then you need to work on 3 steps. I did mention you in the beginning that we have to work on 3 major steps. First, the beginning, then content, and then end. This is something that I really want you to know. आपने क्या लेटर राइटिंग करनी है 3 पार्ट्स में करेंगे, beginning, content, and end. Okay sir, beginning. अच्छा, what I am going to teach you is not very different that you can find in each and every book. ये तो मिल जाएगा सर, आपने कुछ अलग कैसे बताया? How you are being different? Now I'm going to tell you. Wait on. आपने कहा beginning, content, and then. So we do have 3 parts of content. Now what are the 3 parts of content? You need to work it out exactly. The 3 parts of content. First, what you are talking about. Next, what is the condition, and the last, what you want. These 3 things, yeah, exactly. These things I want you to take care. अगर ये 3 चीजें आपके आंसर हैं, then you know everything to write on answer in a better sense. Exactly. सर थोड़ा ना समझाओ, हिंदी वाला इंग्लिश लिखने नहीं आती, तो हम इंग्लिश को लिखेंगे कैसे, करने कैसे करेंगे. तो ठीक है, कोई भी राइटिंग लिखने शुरू करें. आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पहले इशू करते हैं. इशू क्या है, हम किस समय बात करें. सेकंड, सर कंडीशन या हालात क्या, हम कभी भी लेटर में बताते ही नहीं है यार प्रॉब्लम ये चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हालात. एग्जैक्टली द इशू. देन हम क्या करते हैं, व्हाई आई एम राइटिंग. ओके, व्हाई यू सीइंग माय वीडियो मैम. द रीजन इज व्हाई यू सीइंग माय वीडियो, to know how to write down. Exactly, this is what you want. हम वो काम करते हैं जो हमें चाहिए. तो एट द एंड मैं लेटर में बोलूंगा बॉस मुझे चाहिए कि आप ठीक कर दो. दैट आई वांट द अथॉरिटी टू टेक मेजर एक्शंस टू सॉल्व माय प्रॉब्लम. तो सर इसको थोड़ा अलग पार्ट में कर लेते हैं. बिगिनिंग को बोलते हैं इंट्रो. एग्जैक्टली. व्हाट यू टॉकिंग अबाउट बोलते हैं सब्जेक्ट. आई रिपीट स्लोली. बिगिनिंग को बोलते हैं इंट्रो, जहां हम अपना इंट्रो करेंगे. देन सर सब्जेक्ट आ गया हमारे पास. सब्जेक्ट पर इशू आया हमारा. इशू पर हम जो चाहते हैं और डिमांड्स आई. एंड देन एंड. एंड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वन. You must the positive. But I must be hoping that you are going to do. So you will do this as soon as possible. I need to mention that verse. It really has a great impact on the reader. कि जो पढ़ रहा हूँ तो लगना चाहिए यार मेरे लिए पॉजिटिव सोचता कुछ, और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा. And then says the component note and the letter writing. So in a brief, you have to work it out the letter writing 3 steps. Okay, I didn't work the letter writing how to write a letter. It's a very easy part. First of all, make sure that while writing a letter to the editor, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पहले उसको इंट्रोड्यूस करना बॉस. That okay, I'm not writing through the help of this. Exactly, through the help of your esteemed newspaper. Through the help of your esteemed newspaper, I would like to. Here I am being saying, through the help of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concern. Listen carefully. This is something that I really want you to work on. To the concerned authority. मुझे नहीं पता कौन सी authority. That's why I mentioned concerned authority. ये आप हर आंसर लिख सकते हैं. क्योंकि authority definitely चेंज होगी, वेरी करेगी, पर आपके लिए authority चेंज हो सकती है. तो आपने दिया through the help of this letter, I would like to draw the attention of concerned authority towards your subject. It's your subject, as I told you. Towards जो भी आपका subject होगा. Then you need to mention the conditions. This is condition means the issue. वो issue आपका मुद्दा जिसको लेके आपने लेटर में शुरू की. Issue and then you want your demands. What you want, man, that demands.
and then make sure and must be the positive one. आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए लास्ट में उसको लगना चाहिए कि हाँ यार बंदा पॉजिटिव सोचेगा, प्रिंट करूंगा, and then you can write an answer. This what I do have for you to know about editor writing, the letter to editor. In my earlier classes, really what I need to mention or what I am going to mention in my later on classes is the way to write on a better sense. What we need to work it out for better English. We have to read maximum. Make sure अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो डेली रीडिंग आना होगा. Daily you have to read. Where you find the reading words? सड़क पे चलते हुए, कॉमिक्स जनरली, ठीक है, आपकी बुक्स कुछ भी डेली रीड करो. What the connection the reading with the letter writing? Man, if you want to master writing, first you need to the master of reading section. That you're going to know in my reading other video class where I'm going to work out the comprehension, how to do the comprehension better sense. That will be very helpful for you. And for that, you need to subscribe my channel. If you like my videos, then go for it. Or watch my videos on a regular basis so that I can teach you the maximum that I can on video classes. Thank you. All the best. Bye.